Good afternoon to everyone. In the previous class, we completed the topic of poverty, and we completed the topic of poverty. And I told you that some questions I will be would be giving you in the next class. I was telling like that. So we may write some questions regarding poverty. So it is for your practice, and they can also be probable questions to be put by UPSC. How is poverty measured in India? How is poverty measured in India? And second part of it, this question is what is the present status of India regarding the level of poverty? How is poverty measured in India? What is the present status of India regarding the level of poverty? And this type of question and answer to this question is important for your prelims also, as well as mains. So you have to tell about the method, monetary approach and non-monetary approach, right? And then you have to explain what is the level of poverty in our country, H for monetary approach, and then H for non-monetary approach. The concept of NMPI, etc. You have to use both at this level and also at this level, right? Second, what is the difference between the incidence of poverty and the intensity of poverty? Second part, what is the significance? What is the significance of this difference? What is the significance of this difference for the policymakers? So what is the difference between the incidence of poverty? If you remember my class regarding this chapter, I told you that there are two things regarding poverty. Poverty is wide over how many people, and you can say what is the HCR, head count ratio. How many people are suffering from poverty? How many? But second thing is what is the degree of suffering? How much people are suffering from poverty? This is a different case. And when you talk about how much people are suffering from poverty, you talk about intensity of poverty. And if you say how many people as a percentage of population or how many people in millions, this is about the incidence of poverty, right? That way you have to write, and then you have to write about the significance of this difference for the policymakers. By that, I want to ask from you how policymakers are to use this difference in making the policy for removal of poverty in our country. It is not enough to see how many people are suffering from poverty. You need also to see what is the level of deviation from the poverty line. Accordingly, your steps should have weightage, right? If people are far away from the poverty line, you need to provide for more money for eradication of poverty. Such type of things you have to write. You can also quote an MPI. In that case, also I talked about intensity of poverty in my previous class, and this is quite expected question, I think. So you should work on this. Question number 3. What do you understand by? What do you understand by trickle down? Trickle down in poverty eradication. Do you think that it is a good strategy for the removal of poverty? Next question number 4. What do you understand by basic needs approach? What do you understand by the basic needs approach to development? Do you think that if India can use it
for poverty removal. In place of high growth policies. Question number 5. Comment on the statement that we are always to live with poverty. Make a suitable strategy. Make a suitable strategy of poverty removal in India. So try to attempt these questions. And Professor Amartya Sen's thoughts are also important, like why he gave emphasis on education and health, right? And his idea of real poverty and such things. They can also ask you which model is better, direct benefit transfer into the accounts of the poor people, or universal basic income transfer. There is a concept called as universal basic income transfer. Now, if you see the survey of economic survey 2016-17, during those times economic survey used to be in 2 volumes, right? Volume first, volume second, and now again we see only 1 volume of economic survey. So in 2016-17 economic survey, there was a full chapter on this topic, whether India should go for universal basic income transfer, and that survey was written by the then chief economic advisor, Honorable Mr. Arvind Subramanian. He wrote that survey, and chief economic advisors play a great role in writing economic survey. So in that economic survey, he was proposing that we can remove various kinds of subsidies, which we give in the form of cheaper goods and other ways. So we can remove all these, and we can make a kind of basic income transfer to each household of our country. In that, we can make differences among the people like that. He was just suggesting a kind of model, which was what this one, universal basic income transfer. And one day, if you remember, I talked about a student of me, Mr. Suresh Kumar, and he's present in IRTS. And when he was appearing for UPSC, even now he sits in this examination. But at the time when he got selected, before interview, he asked me, sir, these are the questions which I prepared, which I am expecting that they would be asking. So in his list, this was also there, universal basic income transfer. So I said to him, suppose in the interview board they ask you, should India go for this or not, right? So what arguments you will give? So basically, he talked about automation in our various industries, robots, the use of robots, artificial intelligence, IoT, such type of items. And he said that because of this technology, we see a big amount of unemployment sort of thing. People are not able to get good employment opportunities because of this automation. Therefore, I think that India should have a kind of universal basic income transfer. If more and more robots are working, then how people will earn income? So I smiled and I kept mum around my lips. I didn't say anything. He said, "Me, sir, why are you smiling? Why given you a wrong answer?" I said, no, it's not wrong. But in India, robots is not the main issue. If you study economic survey 2016-17, ours in our country is basically the problem of targeting of government schemes. We are not having that great level of the use of robots. Robot density of our country is not that much good. So Finland and other countries, if they are having this system, this is due to automation in their countries. Here in our country, basic issue is, so you can say about automation, but you should also say that our government schemes are not properly targeted, and various non-deserving people take advantage of it. So we can remove these schemes and we can have this system in place, and then in entry board you can say that this thing is being talked about, or this thing has been mentioned in economic survey 2016-17. In that way you can say in the entry board. So universal basic income transfer is also a model. So if you want to remove poverty, this model is not good in our country, in my view, because again we have to see Professor Amartya Sen's views here. Capability approach, he gave capability approach. It's not necessary that whatever money we are sending into the accounts of the people, they would be wisely using that amount. We are not sure about that. So in a selective manner we can go for this, but overall for the whole country we cannot use this. They can ask you questions like these also, so be careful. But I gave you various thoughts regarding poverty. Using those thoughts you can write a good answer, right? Okay, so now we are in a totally new chapter, that is unemployment. So please go for the new chapter, unemployment. So first of all we need to write intro. In intro we will be defining what is unemployment. So you can write like this: unemployment is a condition. Unemployment is a condition in which a capable
job seeker, a capable job seeker is not able to get employment. Thus, from the above, it can be said that, make this sign of dash. Thus, from the above, it can be said that the involuntary unemployment, in inverted comma you can write, the involuntary unemployment is only unemployment, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. हिंदी में कहेंगे अनिच्छिक बेरोजगारी ही बेरोजगारी, विदाउट योर चॉइस यू आर अनएम्प्लॉयड. देन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट पर्पस you need to see whether a person is capable or not. About capability I will be talking after some time, but capable person must be capable, but he must be job seeker. If you see here the language, unemployment is a condition in which a capable job seeker, a person must seek the job, he must be in the search of job, right? So let me first read this sentence paragraph and put before you the more explanatory language, right? So a capable job seeker is not able to get employment. Thus from the above it can be said that the involuntary unemployment is only unemployment, बिना इच्छा के, क्योंकि जॉब सीकर है, right? So unemployment is only about job seekers, right? And if you have seen UPSC mains paper of 2023, recently held mains paper, GS3, you must have seen a question regarding associated with this topic, how methodological problems are there in measuring unemployment. Type of question was there कि जो unemployment के methods होते हैं, जो system होता है, उसमें क्या problem है, क्या कमियां है, ऐसा भी question आया है. तो unemployed में you will be including only those people who are job seekers. बेरोजगारी में उन्हीं को शामिल करोगे जो job seeker हैं. लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब ढूंढने नहीं जाते हैं, लेकिन वो जॉब कर सकते हैं अगर हाउस होल्ड लेवल पे उनको कोई काम दिया जाए. तो इसलिए यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हम मेजर करते हैं उसमें इश्यूज क्या आते हैं. एक बहुत बड़ा इशू ये दिख रहा होगा आपको कि इफ यू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एट द हाउस होल्ड लेवल, देयर आर सम पीपल हु विल बी रेडी टू वर्क बट दे विल नॉट बी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू आस्क फॉर द जॉब. ऐसे कई सारे काम घर पे हो सकते हैं, जैसे कि जो पाउच होते हैं, पेपर के पाउच होते हैं, थैलियां कहते हैं जिनको, वो लोग घर पे बना सकते हैं. अगरबत्ती, राइट, इंसेंस स्टिक्स घर पे बना सकते हैं. ऐसे बहुत सारे काम वो घर पे कर सकते हैं, लेकिन बाहर करने नहीं जाएंगे. If they are not presenting themselves as a job seeker, they will not be counted as unemployed. Similarly, there is a concept of discouraged worker. So discouraged worker is which worker who got discouraged. Initially he searched for the job, but he was not able to find out any job, so he is not presenting himself and sitting idle in the house, but he is having tendency to present himself, but he lost his motivation. अब मोटिवेशन लूज हो गया तो वो नहीं जा रहा है, प्रेजेंट नहीं कर रहा है, छोड़ दिया उसने कि कुछ नहीं हो सकता है. तो हम कई बार अनएम्प्लॉयमेंट को सही नहीं पता लगा पाते हैं. इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने किया था 2026 में, डिस्करेज वर्कर. लेकिन उसका थ्रेड पकड़ने के लिए आपको डेफिनेशन देखनी पड़ेगी. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन इन व्हिच अ कैपेबल जॉब सीकर इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट. जॉब सीकर वर्ड is important. If a person is not job seeker, suppose any student is preparing for UPSC, he is not job seeker, suppose, then he will not be counted in the number of how many people are unemployed in our country. Similarly, there are various females in our country. They prefer to remain in the house itself, and they want to care their family members, old age people in the home, and their kids. They are to look after their kids and other family members like husband and so. So they do not want to go outside. And there was also a question in 2023 mains paper about care economy. What is the difference between care economy and monetized economy? And how woman empowerment can convert care economy into monetized economy was a question. In care economy, we talk about such things which are associated with care of the people, for which there is no exchange of money. Like a mother is teaching to her son and daughter, father is teaching to her son and daughter, wife is looking after husband. Various activities are being done in the house. These all activities are covered under a single word that is called care economy. But care economy is not the part of reporting, because we in economics do not understand it, do not assume it to be productive, right? So when you go for woman empowerment and particularly economic empowerment, then they will start working outside, they will start working in their home itself, then their care economy will convert into a kind of monetized economy. That was the question put by UPSC, right? Now, what is the meaning of a capable job seeker? Capable means what? So capability, you are not having a full stop for capability. Capabilities may be infinite, every capability may be infinite, and number of capabilities again may be infinite. तो हम कैसे कहें कि कौन capable कौन capable नहीं है? तो लोअर साइड में देखा जाता है capability minimum क्या होनी चाहिए? So a person must belong to the working age. The person must be of working age. Capabilities minimum level starts from that. So change the paragraph, then you should write. You have written up to this, now change the paragraph in introduction. So far is capability is concerned, a person must belong to the working age, which is
15 to 59 oblique 64 years in India. So friend, working age, a person must be of the working age, and working age is usually from 15 to 59. Like UNDP is one institute which considers 59 to 15 to 59, and our surveys of unemployment which are conducted in our country, they do also take into account 15 to 59. But still I wrote oblique and then 64. So this is accurate, I think you can say, because there are some constitutional posts in our country for which retirement age is 65, like that. So therefore I wrote 64. When when the person in that constitutional post becomes of the age of 65, there is retirement. You might have studied like this constitutional a person in that or this constitutional position may remain up to 6 years or up to 65 years of age, whatever is earlier, like such type of language. But I'm telling you, this is basically the working age when surveys are conducted. But in order to make everything complete, I wrote this, and it's not like I'm writing this. Good papers, research papers, literature, they write this way. So I wrote in that way. So far as capability is concerned, a person must belong to the working age, which is 15 to 59 oblique 64 years in India. So in our country, this is basically the working age, right? And if there is a largest proportion of the population belonging to this age group, then you say that it is a demographic dividend. Working age people, if they are having largest proportion in overall demographic profile of your country, this means that people of the age below 15 years and people beyond the age of this, if you add up together, this is dependency ratio. They are dependents, and working age people dominate. This is good thing because earning people जिनमें कैपेसिटी है, वो अर्न करने की अलग बात है, लेकिन उनमें कैपेसिटी है, वो प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाए तो डिपेंडेंसी रेशियो कम होने की स्थिति जो होती है, this is called demographic dividend sort of thing. And India is having that profitable situation. Dividend means what? When you divide the profits, companies divide the profits among the shareholders, then this profit is called dividend. T, you are not to apply the word T. Dividend नहीं, जैसे provident. Provident में T लगता है. Dividend बोल रहा हूँ. So डिविडेंड प्रॉफिट को डिवाइड करें तो डिविडेंड है. तो एक तरह से अगर आप इंडिया को कंपनी मान लें तो इसकी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऐसे कि प्रॉफिट मिल रहा हो, जैसे तो एनालिसिस वर्ड्स इस तरह से आते हैं. सो आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड. Demographic dividend is the dominance of working age people over dependence, right? So this is a situation of demographic profit dividend. This is about introduction part of unemployment, friends. So there are two important things. Only those people will be called as unemployed if they are unemployed because of not their wish. They are presenting themselves and still unemployed. And they must be capable. Incapability, we are to see minimum the age, and age must belong to working age group. Right? That is the point. Now go for next studying some important forms of unemployment. Forms, FORM. This is cyclical unemployment. Unemployment arising during economic oblique business oblique trade cycles is called cyclical unemployment. Unemployment arising during economic business trade cycles. ये कुछ भी बोलो आप, economic cycle बोलो, business cycle, trade cycle, is called cyclical unemployment. We can make a diagram for this. So this is a kind of GDP curve. So GDP is increasing, moving up, getting down here, downturn, upturn, downturn in this way. In this period, when the GDP is getting down, the kind of cyclical unemployment will take place. Then from this point onwards, this unemployment will start declining. In this way, you can say that cyclical unemployment occurs in the economy, depending upon how your economy is undergoing different cycles. So it is quite easier, right? Change the paragraph then, right? The most dominant reason for this unemployment is considered to be the lack of aggregate demand, the lack of AD. In Keynesian economics, we studied the most dominant reason. We are not telling that this is only the reason. When during Corona, when economies underwent a kind of recession, you couldn't say or you cannot say that it was due to decrease in aggregate demand. Supply side factors were working, and people were not able to work in factories, and many more factories could not produce because during lockdown they were not able to get raw materials, other things, workers, and so on. So it was a kind of mix-up, demand as well as supply side factors. So it's not always the case that cycles occur always due to this, but most of the thinkers think that aggregate demand is dominantly responsible for this. Therefore, I wrote the most dominant reason for this unemployment is considered to be considered to be the lack of aggregate demand.
This unemployment is not much challenging. By applying a mix of monetary and fiscal policies, by applying a mix of monetary and fiscal policies called as stimulus. By applying a mix of monetary and fiscal policies called as stimulus, this unemployment can be reduced. So I taught you stimulus, monetary stimulus, fiscal stimulus. By applying these doses of monetary policy and fiscal policy, we can create more employment opportunities. We can boost investment, production starts taking place. So again, people will get employment. So it is not very much challenging and not long-lasting sort of unemployment. You can easily tackle this unemployment because it is cycle-based. When cycle is reversed, unemployment will also get reversed and more employment opportunities will be created. That is the idea behind this. So first is over. I'll go for a second. Structural unemployment. This unemployment occurs due to the following. Mismatch of skills, people lack skills, they are having skills which are not required. Mismatch of skills, the lack of adequate industrial development. Labor force in the country is increasing higher speed, but industrialization is not adequate. In such case also we say that it is structural unemployment. Structure is not good. You are having dominance of the primary sector. Structurally your economy is weak. In that way we say that lack of industrialization, adequate industrialization is also a contributing factor in structural unemployment. But most of the places you will see skill mismatch. Means we are having different skills than what is the requirement. So you can say that people are not having adequate skills, they are lacking skills, right? In that way. So skill is one thing and lack of industrialization is another, right? So this is structural unemployment. And Indian unemployment is basically structured. And if you see this year's men's question, they are asking this. ऐसा क्वेश्चन है कि क्या इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल है, तो आपको यस बोलना पड़ेगा. ऐसा कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए उसे. चेंज द पीरियड देन राइट. इट इज टू बी नोटेड that India's unemployment is largely structural. Just to be noted that India's unemployment is largely structural. ये 23 का question है मेंस का. This unemployment is challenging. It can be reduced. It can be reduced by implementing long-term policies of the promotion of savings, investment, capital formation, skill development, etc. You can say that India's unemployment is hugely challenging because it is structural. This unemployment is not a matter of a day and two. You cannot remove this by simply making easy monetary policy and by giving some tax benefits, tax concessions. No, you have to work for a longer period of time, and you should focus on how to promote savings, how to promote investments, how to promote capital formation, how to upgrade the skills of the people, and all these things will take a longer period of time. In the short time period, you are not able to remove this unemployment or reduce this unemployment. Long-term policies are required. In capitalist countries, such kind of unemployments are not there. People are skilled, well skilled,
they are having industries, and labor force is not also growing like that, but they still come under under the phase of unemployment. Why? Because they lack aggregate demand due to one or the other reason, and due to aggregate demand shortage, they are not able to produce. So if they are producing less, they do not need much of the labor force. So people go out from the labor force. People go out from unemployment. Sorry. So it is cyclical. Their industrial development is not having any problem. People are also not having skill related issues. And still unemployment. Then what is the reason? Aggregate demand is getting down. Economy is coming into a kind of cycle downturn. Structural unemployment is due to skills and all. Indian unemployment is basically structural, right? So we covered two concepts, cyclical and structural. They are having totally different nature, and there will not be any exaggeration or doubt if I say that they are opposite to each other, right? One is demand driven sort of thing, another is supply driven sort of thing. Industries, less industrialization, they come under supply side. Skilled worker is not the part of demand side. Skilled worker is again supply side. So one unemployment is due to demand issues, another employment is due to supply issues. In country like in India, we do not see lack of demand. Still we see unemployment. Why? Because people are lacking skills, or our industries are not growing with that pace, which can absorb all labor force in our country. Labor force is growing by a high speed as compared to industrialization. So there are, every year we see more and more people joining into the total army of unemployed people. So this is a third type of unemployment. This guy is unemployed. This guys, it is a condition in which people work without productivity, means zero productivity. Without productivity or with negative productivity. If you see 2012 और 13 पीटी पेपर, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा होता है लेबर का, वो मैं बताऊंगा. इट इज अ कंडीशन इन विच पीपल वर्क विदाउट प्रोडक्टिविटी, मींस जीरो प्रोडक्टिविटी, और विद नेगेटिव प्रोडक्टिविटी. वी हैव टू राइट एक्सप्लेनेटरी लैंग्वेज फॉर दिस, मतलब कि और ज्यादा समझेंगे. यू शुड चेंज द पैराग्राफ, देन राइट अंडर इट द मार्जिनल प्रोडक्ट. एक टेक्निकल है ये लैंग्वेज, बट यूपीएससी ने पूछा हुआ है. द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर is either 0 or negative. मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है वो या तो फिर जीरो है या नेगेटिव है, माइनस में है. तो लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. इफ एट एनी वर्क प्लेस I am writing a simple language. The marginal product of labor. The marginal product of labor is the marginal product of labor is the change in the total production. The marginal product of labor is the change in the total production as a result of the change in the labor employment, change in the labor employment by 1 unit. समझाऊंगा मैं न्यूमेरिकल से. The marginal product of labor is the change in the total production as a result of the change in the labor employment by 1 unit. Right? So you are having a workplace and there is a production activity on that workplace, and there are some workers which are working on that workplace. तो कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है. अगर जितने लोग काम कर रहे हैं उसको आप कहोगे लेबर इंप्लॉयमेंट है इतना. अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो आप कहोगे लेबर इंप्लॉयमेंट 10 के बराबर है. इफ यू चेंज लेबर इंप्लॉयमेंट बाय 1 यूनिट, चेंज किसी भी तरह का हो सकता है. एक लेबर को हटाकर भी हो सकता है. 10 काम कर रहे हैं मैंने बोला तो एक को रिमूव कर दीजिए, या एक तरीका ये हो सकता है कि 10 में एक जोड़ दीजिए, 11 कर लीजिए, 11 कर लीजिए. इन वट एवर वे यू चेंज, उसकी रिजल्ट आउटपुट पे कितनी आ रही है, कितना आउटपुट चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. और ये तभी निकाल पाओगे जब एक कोई फैक्टर को कांस्टेंट रखोगे. आप लैंड है तो उसको कांस्टेंट रख रहे हो, फिर आप लेबर ला रहे हो और कुछ ना कुछ लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हो और फिर उससे प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है. मैं न्यूमेरिकल करके आपको दिखाता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे इस चीज़ को. जैसे डिजिटल बोर्ड है, सब कुछ इफेक्ट्स है. अब मैं अपना टाइम चेंज कर रहा हूँ. जैसे मैंने 1 घंटा पढ़ा दिया है, लगभग 1 घंटा पढ़ा दिया है, और ऐसे मेरा टाइम चेंज हो रहा है. तो वेरिएबल फैक्टर कौन है, मतलब ये टाइम है. जो दिखने में आपको मैं दिख रहा हूँ, मैं वेरिएबल फैक्टर हूँ, बट आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं फिक्स हूँ. नहीं, मैं एक आई एम फ्लो ऑफ टाइम, यू कैन से. सो फॉर हाउ लॉन्गर आई एम फ्लोइंग इन द क्लास, accordingly I am changing my quantity. So from the above it seems that
there is a fixed person called Rameshwar who is teaching. No, there is no use of Rameshwar. Rameshwar can remain seated idle without speaking in the class. What's the sense of it? जितना मैं बोल रहा हूँ वो वेरिएबल होता जा रहा है. मुझे जितना पढ़ाना उतना बोलूंगा, फिर मैं कहूँगा कि अंकल मिलते हैं, राइट. और कितना क्लास में आउटपुट आ रहा है, राइट. ये आउटपुट आमतौर पर डिक्लाइनिंग होता है. हर एक टाइम के साथ आउटपुट लेवल उतना नहीं आ पाता है. इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर. हर जगह पे होता है. किसान फर्टिलाइजर मेंस में पढ़ाऊंगा, मेंस से पढ़ रहे हैं हम लोग. व्हेन आई विल बी टीचिंग लैंड रिफॉर्म्स, आई विल बी टीचिंग यू दिस सब्सिडीज. हम क्या कर रहे हैं, फार्म लैंड फिक्स है और फर्टिलाइजर चेंज कर रहे हैं. हर एक फर्टिलाइजर की डोज पहले से कम प्रोडक्शन में ऐड करती है. और पंजाब वगैरह में ये सिचुएशन आगे कोई ऐड नहीं कर रही है, या फिर और जितना ऑप्टिमम होना चाहिए उससे नीचे हो रहा है. लेकिन किसान को समझ नहीं पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो हो रहा है. सो आई डू नॉट वांट टू स्पीक मोर, रादर आई वांट टू प्रीफर टू गो फॉर न्यूमेरिकल एग्जांपल. उससे आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी. हमने कोई भी एक फिक्स कर दिया, लाइन फिक्स कर दी, और हम यहाँ पर लेबर इंप्लॉयमेंट लिख रहे हैं. यहाँ पे लेबर इंप्लॉयमेंट और यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन और यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन. आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लेबर व्हिच इज ऑलरेडी देयर. 0 से ले रहा हूँ फर्स्ट लेबर, टोटल प्रोडक्शन 10. तो इसके लिए हम कुछ नहीं लिख रहे अभी. अब आप सेकंड लेबर लेके आ रहे हैं, सो इट बिकम्स सपोज 18. तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है आपका, राइट. टोटल बढ़ रहा है, लेकिन इसके आने से एक एक्स्ट्रा लेबर इंप्लीमेंट में चेंज करने से टोटल में कितना चेंज हुआ, टोटल नहीं लिखना है, टोटल में कितना चेंज 8 हुआ. यू आर टू राइट 8 हियर. व्हेन यू ब्रिंग थर्ड लेबर यूनिट, अब 2 काम कर रहे हैं, तीसरा लेबर कितना चेंज हो रहा है वो हमें देखना है. तो यहाँ पर सपोज चेंज हुआ 24 का, तो हमारी ये मार्जिनल प्रोडक्ट. ऐसे क्या होता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट डाउन होता है, वरना तो सबका इक्वल होगा. अगर 10 सॉरी ये सबका 8 चलता रहे, तब तो आप पूरी लेबर से वर्ल्ड में चाहे जितना प्रोडक्शन कर सकते हो ना. इन एनी कंट्री वी आर हैविंग मोर एंड मोर पॉपुलेशन, मोर एंड मोर लेबर्स, एवरी लेबर इज एबल टू कंट्रीब्यूट इन द कांस्टेंट मैनर. तो आप तो वर्ल्ड के अंदर कितनी प्रोडक्शन कर लोगे, फिर तो प्रॉब्लम ही क्या है, फिर तो लेबर से ही इकोनॉमी चल सकता है, मशीन की जरूरत क्या है. ये डिक्लाइनिंग होता है. फोर्थ लेबर यूनिट इफ यू ब्रिंग एंड दिस इज सपोज 27, so marginal product is 3. Now you bring fifth labor unit and it remains 27 only. फिफ्थ को लाने से आपकी टोटल में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसा होता ही है. तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0. फिर भी आप जिद करते रहे, 6 लगा दिया, तो ये 25 रह गया, तो ये -2 आ गया. वाई पुअर अनएजुकेटेड पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इट. उनको ऐसा लगता है 25 तो हो ही रहा है, उनको ये नेगेटिव कहाँ समझ में आता है, उनको नहीं पता है इस चीज़ का, वो तो कह रहे हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? समझना पड़ेगा आपको, राइट. और ये यूटिलिटी में भी काम करता है, इसमें प्रोडक्शन बता रहा हूँ, राइट. ऐसे आप इफ यू आर क्वाइट हंग्री एंड यू मे बी हंग्री राइट नाउ बिकॉज द टाइम इज लाइक दैट, वी आर वर्किंग इन दिस आफ्टरनून सेशन एंड यू आर ऑल हंग्री. मेनी टाइम्स यू से सर छोड़ दो क्लास, भूख लग गई है, इस तरह से बोलते हैं. इस समय आपको अगर यू टॉक अबाउट कंजप्शन, व्हेन यू टॉक अबाउट कंजप्शन यू टॉक अबाउट यूटिलिटी. कंजप्शन गिव्स यू यूटिलिटी and goods are there, you consume them, so they give you utility, right. And when you talk about production and the factors of production, you talk about productivity or production. If we take this as an example of consumption suppose, या थोड़ी देर के लिए लेबर इंप्लॉयमेंट भूल जाओ आप, टोटल प्रोडक्शन की जगह टोटल यूटिलिटी मान लो, वो मार्जिनल यूटिलिटी है. पहला ब्रेड, दूसरा ब्रेड, तीसरा ब्रेड. पहले ब्रेड में बहुत ज्यादा था तो 10 का मिल रहा था आपको यूटिलिटी. अब दूसरी ब्रेड आपने ली तो 8 ही उसकी यूटिलिटी, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है. पेट खाली होने पे यूटिलिटी ज्यादा होगी ना. 2 रोटी खाने के बाद आपको उतना भूख नहीं रहा, फिर तीसरी मंगवाई, फिर चौथी मंगवाई, फिर पांचवी मंगवाई, राइट. तो पांचवी की यूटिलिटी 0 है यहाँ पे, तो भी आप खा रहे हो, राइट. तो भी आप खा लेते हो. ये कब खाते हो, जब ये फ्री में मिलता है. हम किसी के फंक्शन में चले जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह वेडिंग वगैरह में लोग खूब सारा प्लेट में भर लेते हैं. यूटिलिटी है नहीं है, प्लेट में भर लेते हैं, और लास्ट पॉइंट तक चलते हैं वो. यहाँ यूटिलिटी नहीं है तो भी ले रहे हैं, राइट. और मामला यहीं तक नहीं रुकता है, फिर और खाते हैं, 6 और लेते हैं, चाहे यहाँ पे वोमिटिंग हो रहा हो, -2 हुआ है. इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है हाउ टू टेक रेशनल डिसीजंस. तो अब यही चीज़ अगर आप सागर रत्ना में गए होते तो आप इतना देख रहे होते, अच्छा मुझे यहाँ पे 3 का, बस 3 का. वेटर से पूछोगे चपाती कितने की है, 50 रुपये की है, और मुझे यूटिलिटी 3 की मिल रही है, अर्थात मैं थोड़ा ही भूखा हूँ, लेकिन रोटी का रेट तो एक ही होता है. 50 रुपये की रोटी 50 की होगी, आपकी यूटिलिटी कम होने से उनका रेट थोड़ी कम होता है. वो अपनी प्राइसिंग कॉस्ट और सर्विंग एम्बियंस से करते हैं, आपकी यूटिलिटी देखकर वो प्राइस थोड़ी तय करते हैं. तो आपको देखना है. सो वेटर इज कमिंग आस्किंग यू, सर शुड आई ब्रिंग 1 मोर चपाती फॉर यू. नो नो प्लीज डू नॉट ब्रिंग राइट नाउ, कैन यू प्लीज फिल अप दिस ग्लास ऑफ वाटर. पानी भर दो थोड़ी देर के लिए, सोच के बताता हूँ. आप घूम के आओ, मैं सोच के बताता हूँ. हमारा रेशनल डिसीजन कर रहे हो, इतना सोच रहे हो, राइट. तो आप लास्ट में आता है, अगर आप रेशनल हो तो आप 50 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 3 रुपये आप लेने दो, मुझे नहीं चाहिए. और मन में क्या सोच रहे हो, इन केस मेरे को ज़्यादा भूख ने परेशान किया तो घर पर मेरे बिस्किट और अन्य चीज़ें पड़ी है, मैं उनको कंज्यूम कर लूँगा. इतना दिमाग हम लोग लगा रहे हैं. इससे फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी के अंदर फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए. अभी यही क्लास जो आप कर रहे हो, ये ₹2 लाख की होती, 1.5 लाख की होती. मैं उन क्लासेस में भी रहा हूँ जिनमें, एंड मोस्ट ऑफ यू मे बी नोइंग अबाउट मी, माई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन. तो यही क्लास लोग 2 लाख रुपये में भी पढ़ते थे, 1.5 लाख में पढ़ते थे, ऑनलाइन में भी 1.5 लाख का था. एंड दिस इज नाउ अवेलेबल फॉर ₹10,000. यूटिलिटी कितनी भी कम हो, यूटिलिटी आपसे भी तो बनती है. तो छोड़ो, हम कमेंट पे ही ध्यान देंगे. और ये यूटिलिटी बढ़िया लग रही है, क्या फर्क पड़ता है, 10,000 रुपये तो वैसे ही आ जाते हैं. Therefore, there should be, if you want to make people more disciplined, if you want to make people disciplined about how to better use resources, things, items, coaching, services, you should make proper tariff. अब फर्टिलाइजर पे आ जाओ, ये यहाँ फर्टिलाइजर समझ लो, यहाँ प्रोडक्शन समझ लो. पंजाब वगैरह में ये कंडीशन हो रहा है,
Still farmers are using fertilizer. Why? Because it is cheaper and make the price market based. अपने आप होगा. But in India we see politics also. No economic decision is without politics in our country. So अब बात if we come to our basic issue. So what is disguised unemployment in this numerical example? Person number 5 and person number 6. They are disguised unemployed people. So disguised unemployment is like this. Zero marginal productivity. ये marginal productivity zero या minus में. And we can show the same case through a diagram as well. एक diagram भी बना सकते हैं. आपका पढ़ने का टाइम है और कैरियर बनाने का टाइम है. ज़्यादा ध्यान, you should give more focus on your studies, labor employment. This is total production. You have to show total production. Right. So suppose in this figure you are showing labor employment like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. तो dotted line की इधर वाली जो employment है, this is disguised unemployment. इंग्लिश में आप कहावत बोलते हो ना, मैन इन डिस्गाइज. इसको आप कहते हो छिपा छुपा रुस्तम, इस तरह से बोलते हैं मैन इन डिस्गाइज. छिपने का मतलब है इसमें छिप रहे. जो ये लोग काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा दे आर एम्प्लॉयड, लेकिन उनका वो है अनएम्प्लॉयड, दिख रहा है एम्प्लॉयड. एक ओरा या कैमोफ्लेज हो रहा है, इसमें बना रहे हैं हम लोग, सच्चाई को ढक रहे हैं. मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि काम कर रहे हैं, जबकि इनका होना नहीं होना बेकार है. इनमें से इसको निकाल दो, आप इसको निकाल दो, उल्टी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. आप यहाँ प्रोडक्शन यहाँ तक है, जैसे इनको रिमूव करोगे ये बढ़ जाएगा. इसमें आप देखोगे इस आदमी को हटाओगे आप तो 25 की 27 हो जाएगा, और इस आदमी को भी हटाओगे तो आपकी प्रोडक्शन डाउन नहीं होगी. दिस इज और दिस कर्व इज टोटल प्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ कर्व, यू कैन से. यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल प्रोडक्शन कर्व. तो 2013 या 12 की पीटी में था कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर का क्या होता है. उसमें एक ऑप्शन था जीरो, जीरो या फिर नेगेटिव दिख जाए. दो तो होने से रहे, एक में जीरो एक में नेगेटिव दे दिया आपको. तो एक प्रश्न के उत्तर दो कैसे हो सकते हैं, या फिर वैसा कोई फॉर्मेट बना के देंगे वो, जैसे बीपीएससी वगैरह में किया था. तो अब आवर टॉपिक स्टिल कंटिन्यू लाइक दिस. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, आप यहाँ पे हो, मैंने ये डायग्राम बनाए और मैथमेटिक्स वगैरह करें. अब हम देखेंगे कि इंडिया में ये कहाँ होता है, कैसे इसको रिमूव करें, इसी टॉपिक में बात करनी है. सो आफ्टर दीज प्रेजेंटेशंस यू शुड चेंज द पैराग्राफ, देन यू शुड राइट दिस अनएम्प्लॉयमेंट is mostly found on those farmlands on which family labor is used. अब आपको समझना पड़ेगा कि फैमिली लेबर का इससे क्या कनेक्शन है. फैमिली लेबर को हम पे नहीं करते. कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जो एज ए कंज्यूमर हो उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही. मुझे वॉमिटिंग ऐसा हो रहा है तो वाई आई शुड गो टू बाई गुलाब जामुन लाइक दैट, कि पैसा भी दे रहा हूँ, मुझे वॉमिटिंग है, मुझे पता है कि इसको खाने से मुझे उल्टी होगी, मैं क्यों करूँगा ये काम. या मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, पैसे देके तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मेरा दोस्त मुझे ऑफर करता है, कहता है आप ये खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे या कुछ और समोसा कचौरी खाओगे. नहीं नहीं मेरा मन नहीं है. अरे खा लो, एक तो खा लो. ऐसा होता है, मनोहार कहते हैं इसे, हिंदुस्तान में मनोहार करते हैं. तो भाई ठीक है, नहीं मान रहे हो तो मैं खा लूँगा, बाकी मुझे जरूरत नहीं है ना, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मेरा मन भरा हुआ है, तो भी मजबूरी में खाते हुए गलत बात, यूटिलिटी नहीं है. कोई फ्री में दे, लेकिन आपके पास पैसे हों फिर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा, फिर भी आप उसको लेके आओगे. ठीक उसी तरह से यहाँ भी है. इफ यू थिंक दैट अ पर्टिकुलर लेबर यूनिट इज नॉट प्रोडक्टिव फॉर यू, it will not be adding into your total production, why you will employ that labor while making a kind of wage payment to him. मजदूरी देके ऐसे लेबर को आप क्यों लाओगे. तो मजदूरी वाले लेबर नहीं आएंगे इस केस में. बट फैमिली लेबर कहीं पे काम कर रही है तो फैमिली लेबर को हमें देना नहीं पड़ता, हम इतनी गणित नहीं करते. चलो ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन दोज फार्मलैंड्स ऑन व्हिच फैमिली लेबर इज यूज्ड फॉर द रिमूवल of this, for the removal of this unemployment, comma, it is necessary that the non-farm activities, this will be
द नॉन फार्म एक्टिविटीज बी प्रमोटेड इन रूरल एरिया। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे आपको। क्लास नोट्स की खासियत रही है कि 7, 8, 10 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 7 आते हैं तो 5 मिलेंगे आपको क्लास से, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। फॉर द रिमूवल ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट इट इज नेसेसरी दैट द नॉन फार्म एक्टिविटीज बी प्रमोटेड इन रूरल एरियाज, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फार्म एक्टिविटीज? Apart from agriculture, other activities like cottage industries, animal husbandry, such type of activities, right? Rural industries, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, cottage industries, पशुपालन, इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट करो तो ये इसकी इम्पैक्ट कम होगी। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, लाइक इफ यू सी दिस डायग्राम, ये लोग काम कर रहे हैं, भले ही दे आर नॉट पेइंग टू ईच अदर, बट उनको ये समझ आता होगा कि हम इतने लोग हैं, इसकी जरूरत क्या है, इतना तो किसी को भी आइडिया लगता होगा। सपोज दैट वन टीचर कम्स इन माय क्लास, दिस स्टूडियो, ही रिमेन्स स्टूड इन द क्लास, ऑलरेडी आई एम टीचिंग, वन टाइम ओनली वन टीचर कैन टीच, और मेरे बाद में भी उनकी क्लास नहीं है, वो मेरे साथ ही खड़े हैं, तो उनको भी समझ आ रहा है और मुझे भी आ रहा है कि भाई एक की तो जरूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्लास नहीं होगी इसलिए वो खड़े हैं शायद। इसी तरह यहाँ पे हम मैथमेटिक्स नहीं कर रहे जो मैंने यहाँ पे बताया, रूरल पीपल आर नॉट डूइंग दैट, बट दे आर हैविंग कॉमन सेंस। कॉमन सेंस है ना कि एक खेत पे हमें 3 लोगों की जरूरत है, हम 6 लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। दिस अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो आप क्रिएट कर दो, इसके अलावा नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम ले आते हैं, एक डायग्राम इधर भी बन सकता है, ये एग्रीकल्चर का डायग्राम है, और हम इसी एक्सिस को, इस वाले को एक दूसरी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको ऐसे ले गया था और यहाँ पे मैंने एनिमल हस्बेंड्री लिख दिया, ये वर्कर्स 8, 9, 10 इनको मैं इधर ले आता हूँ, ये 0 इसके इधर का 0 यहाँ पे है, तो शुरू में तो प्रोडक्शन बढ़ता है ना, तो मैं इसको ऐसे ले गया, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर ऐसे है, 1, 2, 3 यहाँ से मैं निकाल रहा है, ये लेवल को निकाल रहा है मैं, इनको यहाँ पे इंप्लॉय कर दिया 1, 2, 3, और जो 7 लेवल वो इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, और 3 कितनी करेंगे, यू हैव टू गो लाइक दिस एंड दिस वे, एंड इफ यू कॉल इट x1, दिस इज x2, योर टोटल प्रोडक्शन विल बी x1 + x2। तो आपने इनको काम दे दिया, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। आप कहते हो ना डबलिंग द फार्मर्स इनकम और सच टॉपिक्स यू स्टडी, ऐसे दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। वी आर हैविंग रिसोर्सेज बट वी आर नॉट हैविंग हाउ टू अरेंज देम इन अ बेटर वे। इफ यू प्रमोट दिस एनिमल हस्बेंड्री, दीस पीपल विल कम, दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली इन एनिमल हस्बेंड्री। एक्सेस मैंने सेम बनाया क्योंकि इसके लिए फिर नहीं जाना चाह रहा हूँ, इसी को एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर रहा हूँ, एनिमल हस्बेंड्री की प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज डिस्क्राइब्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। It occurs due to the following: lack of knowledge about job vacancies, search for better job, work for upskilling। ये हमेशा रहता है इकोनॉमी के अंदर। कुछ लोग आपको दिख जाएंगे जिनको जॉब वैकेंसी का पता नहीं है, उनको पता लग जाएगा तो कुछ और होंगे, मतलब कुछ ना कुछ रहेंगे ऐसे लोग, इसलिए हमेशा रहता है सर्च फॉर बेटर जॉब। कई बार लोग होते हैं जो अपने प्रेजेंट काम को छोड़ देते हैं, नए काम को ढूंढते रहते हैं, तो उस समय वो अनएम्प्लॉयड से हो जाते हैं। एवरी टाइम व्हेन यू सी द इकोनॉमी, हमेशा कुछ लोग ऐसे दिख जाएंगे, और कुछ लोग अपना काम छोड़ देते हैं अपस्किलिंग के लिए, तो टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं फ्रिक्शनल। एंड लास्ट टाइम लेंगे इसमें एक कॉन्सेप्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसको भी मैं इसी में डाल दे रहा हूँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसमें 2 बातें होती हैं, दोनों में से कोई एक होगा तो यू विल से कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है। जो बिलो क्वालिफिकेशन, एंड माइंड दिस पॉइंट दैट इट इज एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी, लोग एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। किसी को जो मिला हुआ है बिलो क्वालिफिकेशन, तो यू वुड से कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अंडर एम्प्लॉयमेंट, नॉट अनएम्प्लॉयमेंट। एंड सेकंड, एम्प्लॉयमेंट फॉर लेस टाइम देन इज द रिक्वायरमेंट, कम समय के लिए। जैसे एक आदमी 4 घंटे काम करना चाहता है, लेकिन उसको 2 घंटे का मिल रहा है। कोई टीचर क्लास लेना चाहता है 5 घंटे की, उसको 1 घंटे क्लास मिल रही है। इनमें कुछ भी होगा तो आप कहेंगे कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इससे क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाती है। इसकी जो इम्पैक्ट आती है वो आती है क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डाउन हो जाता है। तो एक और फिनोमेना क्रिएट हो सकता है, प्लस लगा दें उसके नीचे, वर्किंग पुअर्स। एक हमारे की एडजेक्टिव है पुअर्स के आगे, वर्किंग लेकिन पुअर्स, मतलब इस बात को आप कैसे कह सकते हैं, वर्किंग बट पुअर्स। ऐसा काम का मतलब क्या है? आपको कोई पूछे आप एम्प्लॉयड हुआ कर रहा हूँ, तो उसको ये सवाल भी करना चाहिए कि आप गरीब तो नहीं हो। इनकम नहीं देखी जाती एम्प्लॉयमेंट की सर्वे में। अब इसको उतना काम ही नहीं मिल पा रहा है। एक CWS होता है, करंट वीकली स्टेटस, एक मेथड होता है, उसमें 1 घंटे का काम भी आप रिपोर्ट करते हो तो आपको एम्प्लॉयड माना जाता है। अब आपने पूछा कि आपको 1 घंटे का काम मिला, रेफरेंस वीक में ऐसा एक वीक होता है, उसमें पता लगाते हैं, वो कह रहा है कि हाँ मिला है, तो आप उससे ये सवाल नहीं कर रहे हो कि कितने घंटे का और किया, आप कह रहे हो अच्छा ये तो एम्प्लॉयड है। एक
मेथड होता है इसको कहते हैं CWS, करंट वीकली स्टेटस। यूपीएससी मेंस में आया है 2023 में, डायरेक्ट इस ने पूछा मेथोडोलॉजिकल इश्यूज पूछे थे, जिनमें कुछ के बाद मैं आपसे कर चुका हूं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास टू कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।